Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स में। क्लास हमारी 9th सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और आज जो हम टॉपिक आपके सामने पेश करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रिलेटरल्स। जैसे कि चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स, और इसकी हम आज इंट्रोडक्शन करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल किनको कहते हैं, किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे आपको कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, कैसी शक्ल होती है इसकी, और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं क्वाड्रिलेटरल की, बेसिक जो पार्ट्स है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ quadrilateral is a closed figure. Quadrilateral is a closed figure formed by 4 line segments. तो हम क्वाड्रिलेटरल किसको कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल इज ए क्लोज्ड फिगर। ये एक बंद की गई एक फिगर है जो बनती है 4 लाइन सेगमेंट से। जैसे कि यहाँ पे मैं बनाऊंगा फिगर, आप देख सकते हैं ये जो फिगर मैंने यहाँ पे बनाई, दिस फिगर इट इज ए क्लोज्ड फिगर। इसको हम क्लोज्ड फिगर कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल जो होता है ये क्लोज्ड फिगर होती है, और हमारे पास जो ये फिगर है ये भी क्लोज्ड फिगर है। ना हम इसके अंदर जा सकते हैं और ना हम अंदर से बाहर जा सकते हैं। न कोई एंट्री का कोई गेट है, ना कोई एग्जिट का कोई गेट है। तो हम इस फिगर को कहेंगे इट इज ए क्लोज्ड फिगर, बट इट शुड हैव 4 लाइन सेगमेंट्स। क्या इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं? बिल्कुल है। ये एक लाइन सेगमेंट, ये दूसरी लाइन सेगमेंट, फिर तीसरी लाइन सेगमेंट, फिर चौथी लाइन सेगमेंट। सो दिस फिगर इज ए क्लोज्ड फिगर and it has 4 line segments. So this figure is a quadrilateral. This figure is a quadrilateral. Why this figure is a quadrilateral? Because it is a closed figure formed by 4 line segments. Quadrilateral is a closed figure formed by 4 line segments. So this figure is a closed figure and it has 4 line segments, hence it is a quadrilateral. Let's have another example. One side, second side, third side, and fourth side. Yes, this is a figure. This is a figure made up of 4 line segments. Now, is this a quadrilateral? No, definitely it is not a quadrilateral, because it is not a closed figure. Quadrilateral should be a closed figure. This is an open figure. So this can't be named as quadrilateral because it's an open figure. Quadrilateral is a closed figure made up of 4 line segments. Yes, this
This figure is made up of 4 line segments, but it is an open figure. It's not a closed figure, hence it is not a quadrilateral. Not a quadrilateral. Not a quadrilateral. Okay, now we will see the parts of the quadrilateral. Parts. Now if you see this figure, closed figure, it's a quadrilateral, and it has these points. In fact, 2 lines, one coming from here and second coming from here, and these 2 lines are intersecting. These 2 line segments are intersecting at this point. Similarly, we have these 2 line segments intersecting at this point. Similarly, we have these 2 line segments intersecting at this point, and these 2 line segments intersecting at this point. So we have, how many points of intersection do we have? We have 4. Here, 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 and here. These points of intersection are known as vertices. Vertices. Suppose this is vertex A, this is vertex B, this is vertex C, and this is vertex D. So how many vertices do we have in quadrilateral? We have 4 vertices, A, B, C, D. Now let's write vertices. How many vertices are there? There are 4 vertices in a quadrilateral. There are 4 vertices. There are 4 vertices. Singular is vertex and plural is vertices. There are 4 vertices in the quadrilateral. In quadrilateral we have 4 vertices. Okay, we can name them. We have A, B, C, and D as vertices. हमारे पास 4 vertices हैं और इनके नाम है A, B, C और D. Okay, A, B, C, D. These are the 4 vertices of the quadrilateral. Okay. If we take this vertex A and vertex B, these 2 vertices are known as adjacent vertices. A and B are known as adjacent vertices. Similarly, vertex B and vertex C, these are adjacent vertices. Similarly, we have vertex C and vertex D, these are adjacent vertices. Similarly, we have vertex D and vertex A, these are known as adjacent vertices. So A and B are adjacent vertices, B and C are adjacent vertices, C and D are adjacent vertices, A and D are adjacent vertices. Okay. Now, there should be a name to this quadrilateral. इस क्वाड्रिलेटरल का नाम भी तो होना चाहिए. एक तो हमने देखा है इसमें वर्टिसेस होने चाहिए, 4 वर्टिसेस होने चाहिए, ए, बी, सी और डी. अब इस क्वाड्रिलेटरल का कोई नाम भी तो होना चाहिए. हाँ, इस क्वाड्रिलेटरल का नाम है, तो हम इसका नाम लिखेंगे. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल? नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज A, B, C, D. But here you have to write here quadrilateral first. If you have to write the name of this quadrilateral, then you have to write
quadrilateral ABCD. Or we have another method of writing this quadrilateral ABCD. We can write like this: QUAD full stop, QUAD, only QUAD full stop, ABCD. This also means quadrilateral ABCD. We can write the full name of this quadrilateral, or we can even write the first four letters of the quadrilateral as QUAD, then full stop. It also means quadrilateral ABCD. We can also write like this. You must be knowing for triangle we use the symbol this. Yes, this is the symbol of triangle, and this is the symbol for quadrilateral. Since it has four sides, it has three sides, it's a symbol of triangle, and this has four sides and it is a symbol of quadrilateral. So we do not need to write the spelling of quadrilateral. We can use the symbol, we can use the sign. This sign is used for quadrilateral, but you have to write the name also, complete name, that's ABCD. So we can write the name of quadrilateral as quadrilateral ABCD, or it is short form QUAD full stop ABCD. This also means quadrilateral ABCD. Or we can use the symbol, just a closed figure made up of 4 line segments, and then we write ABCD. This is also known as quadrilateral ABCD. So this was the name. Then we will come to the sides. Okay, we will see the sides of this quadrilateral. How many sides does a quadrilateral have? Yes, definitely it has 4 sides. It has 4 sides. We are going to write the names of these sides: AB, BC, CD and DA. These are the 4 sides of this quadrilateral. Maybe if we use PQRS, then we will have different names, but since we have used the letters A, B, C, D, and we are going to write the names according to these letters. So the first side we can take as AB, then we have the second side BC, then we have the third side CD, and then we have the fourth side DA or AD. It has 4 sides. We can name these sides: AB, BC, CD and DAR. It is 4 sides. Side means we are actually joining 2 adjacent vertices. A and B are 2 adjacent vertices, and we are joining these adjacent vertices. The line segment which is formed between these 2 adjacent vertices is known as side. Similarly, we have another side, then we have third side, and then we have 4 sides. Quadrilateral has 4 sides, and we have named the sides as A, B, B, C, C, D and D, A. Okay. Now we are going to write the adjacent sides. First we wrote all the 4 sides: A, B, B, C, C, D and D, A. Now we are going to write adjacent sides. Adjacent sides. Now, which are adjacent sides? Which are adjacent sides? AB and BC. AB and BC are adjacent sides because they have a common vertex. B is a part of AB, and B is also a part of BC. So vertex B is common to AB as well as BC. So these are 2 adjacent sides, AB and BC. I am going to write the names of adjacent sides. AB and BC are adjacent sides, comma.
Okay, now we will take BC and CD. These are also adjacent sides. BC and CD. Then we have CD and DA. And then we have another pair of adjacent sides, that is DA and AB, or we can say AD and AB. AD and AB. AD and AB. So we have 4 pairs of adjacent sides. Yes, we do have 4 sides, AB, BC, CD and DA, but we also have adjacent sides, pair of adjacent sides, that is AB and BC. These are a pair of adjacent sides, AB and BC. Then we have BC and CD, then we have CD and DA, and then we have AD and AB. These are the adjacent sides. Now we have opposite sides. Opposite sides. Now which are the opposite sides? Yes, AB and CD. AB and CD. These are the opposite sides. These are a pair of opposite sides. AB and CD are they form a pair of opposite sides. Similarly, we have AD equal to BC. AD and BC not equal. AD and BC are opposite sides of the quadrilateral. AD and BC. These are the opposite sides. AB and CD are opposite sides. AB and CD. AB and CD are opposite sides, or a pair of opposite sides. And then we have another pair of opposite sides, that is AD and BC. These are also opposite sides. So we have 2 pairs of opposite sides. Okay. After that, we are going to have a look about the angles. Angles. How many angles are there? How many angles are there? Yes, definitely we have 4 angles here. 4 angles. There are 4 angles in a quadrilateral. There are 4 angles in the quadrilateral. We have angle A, we have angle B, we have angle C, we have and angle D. We have 4 angles: angle A, angle B, angle C, angle D. We can also use the name as angle BAD for angle A. Angle A का हम पूरा नाम दे सकते हैं angle BAD. इसी तरीके से जो angle B है इसका हम पूरा नाम दे सकते हैं angle ABC. इसी तरीके से angle C का हम पूरा नाम दे सकते हैं angle BCD, और angle D का हम पूरा नाम दे सकते हैं angle ADC. तो चलिए, यहाँ पे कोई ब्रांच वांच दाएं तरफ बाएं तरफ नहीं है, सीधे एंगल 4 हमें दिखाई दे रहे हैं, तो हम इनका नाम दे सकते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D. So we have 4 angles, and we should also know that sum of the 4 angles of a quadrilateral is 360. ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, और क्वाड्रिलेटरल के क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगलों का सम जो होता है that is equal to 360 degree. Sum of 4 angles of a quadrilateral is 360 degree. ये भी आपको याद रखना है. तो हम एंगल्स देख रहे थे, इसमें 4 एंगल्स हैं, मगर अब हम एंगल्स में देखेंगे कि एडजेसेंट एंगल्स कौन है. तो एडजेसेंट एंगल्स तो एंगल A और एंगल B है, फिर एंगल B एंड एंगल C, फिर एंगल C एंड एंगल D, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, और एंगल D एंड एंगल A. These are the 4 pairs of adjacent angles. Okay, I am going to write here adjacent angles. Adjacent angles. तो कौन है एडजेसेंट एंगल्स? तो कौन है, हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स कौन है. एडजेसेंट एंगल्स हमारे पास है एंगल A एंड एंगल B.
एंगल ए एंड एंगल बी, फिर एंगल बी एंड एंगल सी, फिर एंगल सी एंड एंगल डी, और फिर लास्ट पे एंड एंगल डी एंड एंगल ए. Okay, these are the four pairs of adjacent angles. These are the four pairs of adjacent angles. Angle A and angle B are a pair of adjacent angles. Angle B and angle C, angle C and angle D, or angle D and angle A. These are the four pairs of adjacent angles. Now we have opposite angles. Now which are opposite angles? Opposite angles. तो अपोजिट एंगल्स कौन है? जो एक दूसरे के बिल्कुल सामने हो. देखिए, एंगल ए का सामने वाला एंगल जो है वो एंगल सी है, और एंगल बी का जो सामने वाला एंगल है वो है एंगल डी. सो एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स. एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स. तो एंगल ए और एंगल सी हमारे अपोजिट एंगल्स है, और इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी हमारे अपोजिट एंगल्स है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए एंड एंगल सी, फिर कामा एंगल डी और एंगल बी, या एंगल बी एंड एंगल डी. ये अपोजिट एंगल्स है. एंगल बी एंड एंगल डी. एंगल ए और एंगल सी अपोजिट एंगल्स है. एंगल बी और एंगल डी भी आपस में अपोजिट एंगल्स है. तो इसके बाद हम बात करेंगे डायगोनल्स की. तो डायगोनल्स जो है, जब हम अपोजिट वर्टिसेस, ये अपोजिट वर्टिसेस है. These are the adjacent vertices, and these are the opposite vertices. जब हम इन opposite vertices को आपस में ज्वाइन करेंगे, जो हमें लाइन सेगमेंट मिल जाएगी, उसको हम डायगोनल कहते हैं. जब हम opposite vertices को आपस में मिलाएंगे तो हमें जो लाइन सेगमेंट मिलेगी वो होगी डायगोनल. तो हमारे पास कितने डायगोनल हैं? हमारे पास दो डायगोनल हैं. एक तो AC है और दूसरा है BD. तो हम यहाँ पे डायगोनल्स लिखेंगे. डायगोनल कौन है? एक तो AC है और दूसरा है BD. AC and BD are our two diagonals. तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह. इतना काफ़ी है आज के लिए. शुक्रिया.